Good morning, students. Today we are going to learn about phylum Arthropod of kingdom Animalia. So let's begin with the characteristics of this phylum. First of all, general characteristics. So arthropod means jointed appendages. Okay, the arthro means jointed and pod means appendages. Then there are more than 10 lakhs existing species are there of arthropods. They are many numbers and they have the bilateral symmetry, triploplastic organism and coelomates. They are the true coelomates. Habitat is cosmopolitan. Then these are some of the arthropods, how beautifully they look like, and they have the bilateral symmetry. I can show you that. If we cut into two equal halves, and then two equal halves, okay, so they have the bilateral symmetry. Let me erase this. So equal half में हम इनको कट कर सकते हैं, means they have the bilateral symmetry and those two halves are identical. Then body is divisible into head, thorax and abdomen. Body is divided into three parts: head, thorax and abdomen. In some, head and thorax are fused to form cephalothorax. In the previous phylum, you see that there is formation of head, there is cephalization, but here you can see that body is divisible into head, thorax and abdomen part. And some of the cases, कुछ cases में जो head है और thorax cavity है, it is fused, and this fused form is called cephalothorax. Then jointed appendages are modified to form antennae, mouth parts, reproductive organs. So here in this picture there is clearly visibly head, thorax in the first picture. In this picture you can see that head, thorax, abdomen cavity is there. Then in this case head is this, thorax is this and abdomen cavity is this. यहाँ पे ये head region है, ये thorax region है और पीछे abdomen cavity है. In second case there is fusion of head and thorax. Okay, so this is called cephalothorax. This one is cephalothorax. Head और thorax cavity जो fuse हो गई है, this is called cephalothorax. And in the above case head and thorax, it is divided and abdominal cavity is also visible. Then molting is to grow. They shed their exoskeleton process, also called ecdysis. So in case of arthropods, they shed their body, they shed their actually exoskeleton part. ठीक है, outer body जो है एक exoskeleton है which is chitinous in nature. So वो जो है वो शेड ऑफ हो जाती है, बॉडी से बाहर निकल आती है ताकि जो एनिमल है वो ग्रो कर सके. So this process is called ecdysis, which is done through hormone ecdysone. ecdysone ये हार्मोन है जो कि दिस वन इज सी, सो हेल्प करता है फॉर द प्रोसेस in the process of the ecdysis. Then digestive system is complete. Had appendages from mouth parts with the lateral jaws for chewing or sucking. Complete है, mouth parts present है, lateral jaws present है for the chewing or sucking. Mainly जो arthropods हैं they are divided on the basis of their mouth parts also. Chewing होते हैं कईयों में, sucking mouth parts, biting mouth parts, and then siphoning type of mouth parts are also present in case of arthropods. So respiration, it is carried out by different respiratory organs. Respiratory organs जो हैं arthropods में various type के हैं. There is tracheal mode of respiration in insects, centipedes, millipedes and peripatus. Gills in crustacean and book lungs in scorpion, spiders, etc.
So tracheal respiration is there, then gills are there for respiration. In crustaceans, book lungs are there also. In scorpion, spiders. So here in this picture you can see that this first one is gill, then trachea, and in the B part here it is cockroach, and there is tracheal respiration is there, and next one is book lungs जो कि स्पाइडर और स्कॉर्पियन में प्रेजेंट होते हैं. ट्रेकिया इज देयर इन कॉकरोचेस, ट्रेकियल रेस्पिरेशन. देन दिस वन इज गिल्स विच हेल्प इन द रेस्पिरेशन. मिलीपीड सेंटीपीड्स में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी ट्रेकियल रेस्पिरेशन प्रेजेंट है. गिल्स जो है वो क्रस्टेशियन में प्रेजेंट है. क्रस्टेशियन and then tracheal in the tracheal respiration, then book lungs. tracheal जो है वो सेंटीपीड्स मिलीपीड्स में, and in the scorpion there are book lungs. Circulatory system is open, then heart is dorsally located. In case of cockroaches, heart is dorsally located in many arthropods, and in crustacean blood contains a respiratory pigment called hemocyanin. In case of crustacean, hemocyanin pigment is present. Respiratory pigment is hemocyanin, very very important question. Then there is cavity present in the arthropod which is called hemocoel. Okay, so this one is also important. Hemocoel cavity is present around the visceral organ and is filled with the blood. Excretory system, it includes the Malpighian tubules, green glands or antennary glands which are important and helps in the excretory system. Okay, Malpighian tubules, green glands, antennary glands. So here it is excretory system in arthropods. So जो tube like structure है, these are the Malpighian tubules. This one is the midgut. Okay, यहाँ पे stomach है, this one is the stomach, and this one is the rectum region. तो हेमोसील कैविटी से ये ट्यूब्यूल जो है सॉल्ट, वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं. दिस वन इज द माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स. ओके, सो सॉल्ट, वाटर और नाइट्रोजन वेस्ट जो है यहाँ से ये एब्जॉर्ब करते हैं एंड दे गो आउट टू द रेक्टम एंड थ्रू एनस, क्योंकि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, सो एनस इज देयर. सो द waste particle absorbed from the Malpighian tubules to the digestive system comes into the rectum and then anus and goes out from the body. The nervous system, a nerve ring followed by a double ventral nerve cord which is ganglionated. So how this nerve ring followed by double ventral nerve cord look like? So this one is वेंट्रल नर्व कोड. ठीक है, गैंग्लियन और यहाँ से वेंट्रल नर्व कोड जो है वो रन कर रही है विच इज़ गैंग्लियोनेटेड, मीन्स गैंग्लियन जो है वो प्रेजेंट होंगे. सो इन दिस स्ट्रक्चर डबल वेंट्रल नर्व कोड है. ठीक है, ये जो वेंट्रल नर्व कोड है नीचे जो रन कर रही है दिस इज डबल एंड गैंग्लियन इज प्रेजेंट. हियर गैंग्लियन इज प्रेजेंट. Okay, so this is double ventral nerve cord. And then sense organs include simple eyes, compound eyes, antennae, etc. So in case of arthropods, eyes are compound, simple eyes भी present, compound भी present है, and antennae for the senses, for the sense organs they are present. So here it is compound eyes. How it look like? ये जो एक कंपाउंड है, ओके, एक आई जो है, ये जो इतने मल्टीपल नंबर्स ऑफ लाइक कंपोनेंट से मिलके बनी हुई है, कंपार्टमेंट्स हैं, इतने सारे कंपार्टमेंट्स हैं जो कि एक आई बनाता है. सो लेट मी शो यू द प्रीवियस स्लाइड.
यहाँ पे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स है, ठीक है। इस वाले स्ट्रक्चर में बहुत सारे कंपार्टमेंट है, और अगर एक की बात करें, एक कंपार्टमेंट की बात करें, तो इट इज़ मेड अप ऑफ ओमेटिडियम, ओमेटिडियम, and optic nerves are connected to these eyes. So sense organs जो कि help करती हैं arthropods को for the various purposes. Then reproduction, it is sexual dimorphism है, मेल और फीमेल जो है they look like different. Then development may be direct or indirect, so maybe there is larval stage is also present or maybe not. डायरेक्ट भी हो सकती है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं भी हो सकती है और प्रेजेंट भी हो सकती है. इन सम स्पीशीज पार्थिनोजेनेसिस इज कॉमन. पार्थिनोजेनेसिस जो है कुछ केसेस में होती है. व्हाट डज इट मीन? दिस वर्ड मीन विदाउट फर्टिलाइजेशन. पार्थिनोजेनेसिस मीन्स विदाउट fertilization. Okay, so in case of bees there is parthenogenesis. so यहाँ पे डिप्लॉयड फीमेल बी है, एंड देन ये एग्स हैं, और एग्स जो हैं देयर इज़ नो फर्टिलाइजेशन एंड इट प्रोड्यूस हैप्लॉयड मेल बीज. सेकेंड केस में डिप्लॉयड फीमेल भी हैप्लॉयड है, दिस फर्टिलाइजेशन एग और स्पर्म फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करके डिप्लॉयड फीमेल बीज बना रहे हैं, ठीक है. सो इन केस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस हैप्लॉयड मेल बीज प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इन जब फर्टिलाइजेशन हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे डिप्लॉयड फीमेल बीज प्रोड्यूस हो रही है. सो दिस वन इज ऑल अबाउट द sexual reproduction in arthropods. Then examples, some of the arthropods are the economically important, as apis, honeybee is important, bombyx mori, silkworm is important, lessifer, lac insect is important economically. Then vectors, so some of the arthropods carry the diseases as a pathogen, carry the pathogen from one person, from infected person to the healthy one. Okay, so they carry the diseases. They act as a bus जिसमें पैसेंजर जो है दे कैरी द पैसेंजर, बस कैरी द पैसेंजर एंड लीव्स ऑन द अदर साइड, ठीक है. वन प्लेस से कैरी करते हैं, जैसे पैसेंजर एक बस जो है कैरी करती है पैसेंजर को फ्रॉम वन प्लेस एंड लीव इट टू द अदर प्लेस, वैसे ही ये वैक्टर्स होते हैं, ये कैरी करते हैं डिजीज़ को, पैथोजन को कैरी करेंगे फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन और जाकर हेल्दी पर्सन में जो है उनकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा देते हैं. एनोफिलीज मॉस्किटो, एज यू ऑल नो दैट मलेरियल पैरासाइटल रिस्पॉन्सिबल है क्यूलेक्स एंड एडिस मॉस्किटो, दीज आर ऑल वैक्टर्स. देन ग्रिगेरियस पेस्ट, सो ग्रिगेरियस मीन्स जो कि ग्रुप में काम करते हैं, ठीक है, ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल लोकस्ट, लोकस्टर जो है जिसको कॉमनली लोकस्ट बोलते हैं. सो आप लोगों ने राजस्थान वाला केस सुना होगा. इन दिस ईयर द लोकस्ट विच आर प्रेजेंट इन द ग्रिगेरियस फॉर्म ग्रुप में प्रेजेंट है और उन्होंने अटैक कर दिया था, तो ये बहुत हार्मफुल भी हो सकते हैं. देन लिविंग फॉसिल विच इज़ कॉल्ड लिमुलस किंग क्रैब, it is also gregarious pest, and these are the some of the arthropods. locust है सबसे पहले, butterfly, scorpion, prawn, these are all arthropods. So this is all about the characteristics of the phylum Arthropoda, about their general characteristics, triploblastic coelomates, then about the circulation, respiration, molting, digestive system, ठीक है. appendages present होते हैं. then body is divisible into head, thorax and abdomen. molting is there, अपनी exoskeleton को shed off कर देते हैं ताकि grow कर सके. digestive system is complete. respiratory system is of different type. respiratory organs जो है वो different type की है. tracheal mode of respiration, then gills are there, book lungs are there. Here the pictures of these respiratory organs. circulation open है, heart dorsally rotated है.
देन रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी प्रेजेंट है, हेमोसाइनिन, हेमोसील कैविटी है इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स. Excretory system, very very important. Malpighian tubules are there, green glands or antennary glands are there for respiration. So this is how the Malpighian tubules look like. Then nervous system, double ventral nerve cord present hai. Okay, sensory organs are there for protection, for capturing the prey, and for various region. Compound eyes, antennas are there. This is the picture of compound eye. Then sexual dimorphism is present. Development may be direct, indirect, and parthenogenesis is there. In case of queen bee, queen जो bee है, it can have this parthenogenesis type of reproduction. Then these are the examples: economically important vectors as well as gregarious pests. And these are all the pictures of the kingdom Animalia and phylum Arthropoda. So thank you so much for watching the video.